हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स पे। आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स का सिंटैक्स कैसा होता है, कैसे उसे यूज करते हैं, एंड इवन हाउ टू इनिशियलाइज एंड वेयर टू यूज इट। आई हैव रिटन डाउन थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल्स। जरा इस पॉइंट को ध्यान से सोचो। स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल्स। याद करो, सी में हमने ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ा है जिसमें वी कैन टू ग्रुप वेरिएबल्स। Pause the video, think about it, right? It is arrays, है ना? Now, if arrays can also group variables, then what is the need of structure? First point तो यही कह रहा है कि it is a way to group variables. Then what is the difference? See, difference आपको पता चलेगा when you go to the point two. Point two says structure can be a collection of dissimilar elements. Now, array being array, it is able to store data or elements but which are of same type, right? Now, structure is also a way to group variables, but it can store dissimilar elements. जैसे int हो गया, char हो गया, float हो गया। तो arrays में तो आप एक ही टाइप का डेटा रख सकते थे। इंटीजर टाइप का array बना रहे हो तो you can store integer values, right? लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। You can almost gather different types of elements and then you can store it inside a single unit. Okay. The third point is defining structure is creating a custom data type. What do we mean by custom data type? Now, हमें पता है कि data types are of basically mainly categorized into two types. The first category is primitive data types, right? तो क्या होते हैं primitive data types? We know which is integer, characters, float, double, right? Now, there is another category which is known as non-primitive data types, right? What do we mean by that? चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। लेट मी टेल यू। चलिए मुझे बताइए कि हमें एक डेट स्टोर करनी है। ठीक है, लेट्स से हमें आज की डेट स्टोर करनी है। सो टुडे इज 4 दिसंबर 2025। ओके, नाउ थिंक अबाउट दिस डेट। ओके, आज की डेट, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ द डे नंबर विच इज 4, then we have month number which is 12, and then we have 2025 the year number, right? रियल लाइफ में हम डेट को कलेक्टिवली बोलते हैं, राइट? हम बोलते हैं कि 4 दिसंबर 2025। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, इजंट इट? डे इज another type of data, month is another type of data, then year is another type of data. नाउ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस करो कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर का होने के बावजूद, डे मंथ ईयर होने के बावजूद, वी से इट टुगेदर। सो दैट मीन्स रियल लाइफ में काफी सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं when you have to gather a different types of data, but collectively you will say or you will categorize it inside a single entity, inside a single unit. For example, डेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डेटा हो गया, राइट? एम्प्लॉय में उसका डेटा आएगा, नाम आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगी, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, व्हाट इज द डेजिग्नेशन। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें यू विल गेट टू नो कि ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा है ना? बट स्टिल वी से it inside, like when we are going to symbolize all this data, we will just say this is the data of employee, right? So ऐसे कुछ, तो इस तरह के डेटा को हमें एक ही कैटेगरी में रखना पड़ता है, ठीक है? बट अब आप इमेजिन करो, अगर आप डेट स्टोर करना चाहते हो, राइट? पर ऐसा तो कोई डेटा टाइप नहीं होता सी में, राइट? एम्प्लॉय नाम का तो कोई डेटा टाइप नहीं होता, कस्टमर नाम का तो कोई डेटा टाइप नहीं होता, स्टूडेंट नाम का।
एंड रियल लाइफ में जब हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट, तो वहां पे तो हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है. सो देयर माइट बी अ सिचुएशन कि आप एक कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, देन यू नीड टू गैदर द डेटा ऑफ अ स्टूडेंट एंड यू नीड टू like categorize this or collect it inside a single entity known as student. Now, how will you do it? So C language provides you a way, okay, by letting you define your own type of data. So C language gives you a way to categorize your data. C language gives you a way to define non-primitive data types or let you define your own type of data. Okay, own data type. Okay. So अब देखते हैं कि हम डिफाइन कैसे करेंगे स्ट्रक्चर को. ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं अपना टाइप का डेटा. सबसे पहले तो एक सिंटेक्स देख लेते हैं कि हाउ डू वी डिफाइन इट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट you need to write struct keyword and then you need to write the name of your data type, यानी जिस टाइप का डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हो. ठीक है, for example you want to for example you want to get date, right? So you will create a date type of data type. ठीक है, so you will say struct date, then these curly braces on, semicolon, and inside that you will declare the variables. Make sure you just declare the variables, you will not do anything, just the declaration portion go inside this particular definition of the structure. Okay, चलिए इसको देखते हैं. So this is my VS Code screen. तो मैंने क्या कहा, डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए what we will do, we will just write struct keyword, then we will give the name of the data type, then the curly braces open, and at the end you will also put a semicolon. Inside that you will just declare the variables. Now what a date comprised of, सबसे पहले तो उसके पास होता है एक डे नंबर, राइट, or we can simply say day. We can say second thing is the month, and we have year, right? Now look at this particular definition of this data type. What is this? Now look at this particular primitive data type. So we have int. This is the name of the variable. This is not the name of the variable, but this is actually the data type. For example, int is the data type. Now we have a date data type. Okay. So जब हम date का variable बनाएंगे, so we will do something like this. Date is the data type, and then we will define what? Some variable, maybe date 1, date 2, and so on, right? This is how you declare the variables. लेकिन in C, what you will do is you cannot just directly write the data type. Instead, you need to write this keyword again. Then only C will understand that you want to create the variables of this data type. So this is compulsory in C, but in C++, this is not compulsory. Okay. So variables define करते समय, you just need to write again this struct keyword. That's it. Now, this is not the only way in which you can create the variables. Okay. You can also do something like this. यहाँ पे define करते time, you can also declare the variables. You can also do that. This is fine. Then you need not to write this particular declaration here. This is equivalent to this. Okay, fine. Now, मुझे एक बात बताओ. This is important question. Let me ask you this. ये डेटा तो सेम टाइप का है. ये भी इंट टाइप का, ये भी इंट टाइप का, ये भी इंट टाइप का. तो इसमें एरे क्यों नहीं बना लेते हम? एरे बना लेते हैं, राइट? ये स्ट्रक्चर में क्यों डाल रहे हैं?
If you know the answer, just think about it, give it a shot, and let me know in the comment section. Okay? ठीक है. इसकी बात हम बाद में करेंगे, why we are not creating the array. Let's see to create something like this. For example, a book data type, and inside that we have a book ID, title, and price. Then we have employee, again the same example. So this is how you declare a structure kind of data type. By using structure, you can create a data type. Okay. Now, another question. आपको क्या लगता है जब मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया यहाँ पे, ये कितनी मेमोरी ले रहा है? What do you think? How much memory it is taking? Okay. तो अगर आपको लग रहा है कि this is 4 bytes, 4 byte, 4 byte, so total it is taking 12 bytes, then you are wrong here. This is not taking any memory yet. Okay. Why is that? ऐसा क्यों? जब आप int x लिखते हो तो मेमोरी किसको मिलती है? int को मिलती है कि x को मिलती है? x को मिलती है, right? int तो डेटा टाइप है. This is what you are doing. You are just defining a data type. You are not creating variables. This is similar like आप integer type के data type को define कर रहे हो. Similarly, you are defining a date data type. So by defining just the data type, this will not going to consume any memory at all. इसको memory तब मिलेगी जब मैं date नाम के क्या बनाऊंगा? Variables बनाऊंगा. Okay, variables बनाऊंगा. Now you can say that D1 is occupying how much memory? D1 is occupying 12 bytes of memory, not 4 but 12. Why 12? Because inside date data type we have what? Day, month, and year, which is also of integer data type. Okay, integer takes 4 byte, 3 integer will take 12 bytes. So collectively, D1 will get how many bytes? 12 bytes in order to store what? The data. ओके. अब ठीक है, डिक्लेरेशन तो हो गई वेरिएबल्स की. हाउ डू वी यूज इट? करेंगे क्या? नाउ लेट्स सी हाउ डू वी एक्सेस द वेरिएबल्स इनसाइड अ स्ट्रक्चर. ओके. क्योंकि जब आप कोई वेरिएबल्स एक स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करते हो, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती. ठीक है. यू कैनॉट डायरेक्टली जस्ट एक्सेस डे out of date. No, you can't do that because these this particular day, month, and year is residing inside what? Date. So you cannot directly access it. You need to access it via what? Date type of variable. Okay. तो यहाँ पे date का variable है D1. So in order to get today's date, how you will get it? You will get it something like this. You will say D1, the variable name, then you will specify an operator known as dot operator. This dot operator links the variable to the internal member variables of the structure. Okay. So the moment when you say d1 dot, VS Code will tell you which variable you want to access, day, month, or year. So I'm saying day. Let's type today's day number, which is 4. Then the next data, which is month. Month is what? 12. And then the year, which is 2025. Right? So this is what you are initializing the data members, the member variables of structure date with the values provided by the user. Okay. Now print कैसे करेंगे? Similarly, जैसे normal variables को करते हैं. The only difference is this time you will use the variable date variable name as well. Okay. You'll simply say
person D slash person D slash person D, and then D1 dot day, D1 dot month, and then D1 dot year. That's it. You are accessing the member variables of the structure. You are initializing the member variables of the structure. You are declaring a variable of a structure, and structure is nothing but the user defined data type. This was not here inside C. We have created it. Okay, let's run it. See, this is how you will display something. And again, you can also take the input from the users as well. Okay, that's it. So we have seen how to create the structure variables. Then we have seen how to initialize, and then also what are the member access member variables, and also the member access operator we have seen, right? So this was all about structures. Now the only thing left is the practice. The more you do, the more you will see, right? And one more thing, we have another concept which is union, right? And I want to tell you that the only difference between structure and union, the main difference basically, is the way they are, the way they function, okay, the way they use the memory. Okay, so we know that a structure, when we define, or whatever member variables we define inside a structure, each member variable of a structure will get its own memory, right? जब मैंने आपको कहा कि डेट के अंदर इंट डे मंथ और ईयर है, मैंने ऑल्सो टोल्ड यू कि डे को मिलेंगे 4 बाइट्स, मंथ को मिलेंगे 4 बाइट्स, एंड ईयर को भी मिलेंगे 4 बाइट्स. So each member variable will hold its own memory, and inside that memory they will hold their own data, right? डे के पास अपना डेटा होगा, मंथ के पास अपना, ईयर के पास अपना. पर when it comes to the union, यूनियन ऐसे फंक्शन नहीं करता. ऑल्दो यूनियन का जो सिंटेक्स होता है दिस सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू स्ट्रक्चर. यूनियन लिखोगे द कीवर्ड, आफ्टर दैट व्हाट, some data type name, maybe we will say test. Okay, and inside that you will mention few what member variables. Let's say int digit, and let's say char ch. Okay, now then what is the difference between structure and union here? See, यूनियन के पास जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हो, एक हो, दो हो, तीन हो, एक से ज्यादा हो, तो यूनियन जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द largest data type or the largest member variable having the largest data type. That particular memory will get created inside. Okay, and that memory will be shared across the member variables of that union variable. Okay, so टेस्ट के पास अगर इंटीजर डिजिट और कैर सी एच नाम के वेरिएबल्स हैं, तो मेमोरी ब्लॉक जो क्रिएट होगा that will be created according to the largest data types present inside this particular test. Okay, तो यहाँ पे हर एक मेंबर वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिलती, but the largest one will get the memory. So integer, so that means टेस्ट के पास एक 4 बाइट का ब्लॉक मिलेगा उसको, और उसके अंदर ही सी एच भी रखा जाएगा, डिजिट का वैल्यू भी रखा जाएगा, बट दे कैन नॉट होल्ड देयर ओन इंडिविजुअल वैल्यूज. दैट मीन्स अगर डिजिट को इनिशियलाइज करता हूं सपोज 10 के साथ, तो मेमोरी ब्लॉक में 10 सेव हो जाएगा. सी एच में अगर कोई कैरेक्टर स्टोर करता हूं फॉर एग्जाम्पल बी, तो 10 ओवरराइट होके बी स्टोर हो जाएगा. सो दैट मीन्स that particular memory block is shared across the member variables of the union. That is the only difference between structure and union, right? So ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सपोज तुम बाजार जा रहे हो, तुम्हें डिफरेंट टाइप का सामान लाना है, तुम्हें सब्जी भी लानी है, तुम्हें
तुम्हें हार्डवेयर का सामान भी लेकर आना है, तुम्हें किचन का सामान भी लेकर आना है, देन व्हाट यू विल डू? तुम एक बड़ा सा थैला लेके जाओगे घर से, राइट? बड़ा सा थैला लेके जाओगे ताकि सारा सामान एक में आ जाए। So you have only one memory block, right? And you will put different type of data there only. ठीक है? But the only condition is you cannot put data together. If you are putting the vegetables and you want to put the utensils there, then you need to get out the vegetables, then put the utensils inside that bag. तो यूनियन में बस यही रिस्ट्रिक्शन है. Other than that, the accessibility, the declaration, everything will be same. The only difference is the internal working of it. That's it. Okay, that's it. I hope you get the clarity on these two topics. Now, please practice more, practice hard. And if you have any doubts, please let me know. Thank you so much.